our bank, our vehicle loan journey, I can claim that we are one of the best. I'll not claim to be the best, but I can claim to be one of the best in the industry. जो स्थितियां हैं इस वक्त की इकोनॉमी की, उसको हम बहुत हद तक सुधार कर सकते हैं। Absolutely. Public sector banks का एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगले 1-2 सालों में जो ड्यूल अकाउंट्स वाली समस्या है वो भी थोड़ी We expect that हम देखें कि हमारा जो ड्यूल अकाउंट्स का जो प्रॉब्लम 1 साल पहले आ रहा था, धीरे धीरे वो सबसाइड कर रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक आज एक QR कोड में you scan one QR code which we display and you can get 8 types of loans from the bank including an MSME. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के MD और CEO श्री स्वरूप कुमार साहा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका और तमाम जो और लोग हैं बैंक के हायर ऑफिशियल्स उनका भी बहुत स्वागत है इस खास इंटरव्यू में। क्योंकि बहुत चीज़ें हैं आपसे पूछने के लिए लेकिन बहुत वक्त नहीं है। शुरुआत में जो आप चूंकि इतने बड़े बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इतने बड़े बैंक से जुड़े हुए हैं, स्थितियां जो इस समय बनी हुई हैं, ग्लोबल स्थितियों को अगर आप देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, चाहे मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से चल रहा है सब कुछ और क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, डॉलर लगातार स्ट्रेंथन हो रहा है, किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर के लिए पाते हैं आप इसे चैलेंज? बहुत पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आपने सही बताया कि अभी जो ग्लोबल सिचुएशन है, गल्फ सिचुएशन है, एक बहुत अनसर्टेन एक सिचुएशन की दौर से हम चल रहे हैं। बीच बीच में न्यूज़ आता है, पॉजिटिव न्यूज़ एंड देन अगेन इट ब्रेक्स। सो अभी हमें कॉशियसली अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है इंटरनेशनल सिचुएशन को। आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बहुत अच्छा एक कोशिश कर रहे हैं कि सारे एफर्ट्स किया जाए ताकि हमारा देश का उसमें कम से कम उसका इम्पैक्ट हो। बट क्योंकि इतना बड़ा ग्लोबल क्राइसिस है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हर कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया कुछ ना कुछ आना ही था। एंड गवर्नमेंट अपने रिस्पॉन्स के हिसाब से अपना सारे मुद्दे को एनालाइज करते हुए government has now taken this view that they should increase the fuel price of around 3 rupees per litre. It is a response which all countries are taking in their own way. I think इसका एक impact जैसे होता है क्रूड, जैसे ब्रेंट क्रूड अभी nearly 110 per dollar per barrel हो गया. So these are impacting the country's overall situation. As far as the banking sector is concerned, जो आपका बेसिक क्वेश्चन ही वही है, हम अभी इस सिचुएशन में हम ऐसा कमेंट करना ठीक नहीं होगा कि बहुत इम्पैक्टफुल होने वाला है। इम्पैक्ट तो होने वाला है, बट असेसमेंट ऑफ दैट इम्पैक्ट कि किस लेवल तक इम्पैक्ट होगा अभी थोड़ा उस एरिया ऑफ सिचुएशन में हम आए नहीं है। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाउ द things play out. Government and Reserve Bank of India, as far as banking is concerned, has taken out lots of measures. Exporters के लिए कुछ उन्होंने स्कीम परमिट किया है। गवर्नमेंट में अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ECLGS 5.0 लॉन्च किया है, जिसमें MSMEs को सपोर्ट करने के लिए and some other sectors को सपोर्ट करने के लिए। So these supports will help these MSMEs and some other industries, airlines industry, to at least resist some of the impact that can happen in the future. So government is very proactive. What I would like to say, government is very proactive. Whether it will really have a bigger impact on the overall banking industry as a whole, I think I personally feel we have to wait and see how it progresses. And if the Gulf situation continues, we expect that some diplomacy will prevail until ultimately. बट वो कब प्रिवेल करेगा, क्या कौन सी लेवल तक जाएगा, वी डोंट नो, दैट्स द अनसर्टेनिटी। एंड इन दैट सिचुएशन ऑफ कोर्स एज अ बैंक, as I say Punjab and Sindh Bank, if I say within the banking industry how Punjab and Sindh Bank is impacted, we feel that as of now from our customer base we don't have so much of international exposure, we don't have foreign branches, so immediate impact नहीं हो रहा है।
But we are very mindful of the fact that the MSME component is very लेकिन important. इकोनॉमी तो इफेक्टेड है ही, तो फिर So if the GDP numbers get impacted, if the growth gets constricted, there are some assessments coming from the various economic circles that there will be, if this continues a bit longer, as the oil prices move up, there will be some bips cut in the GDP forecasting that is done, and RBI is the best judge there. We are guided by the RBI forecasting, so maybe every 2 months we have this forecast. So bi-monthly monetary policy will be next bi-monthly monetary policy will give us a much more clear outlook. What is going to be the final? What is they how they foresee the impact? As for the ground, मेरा तो basic आपका जो question है, how do we assess the ground situation? We feel that yes, some of the MSMEs slowly may get an impact, and this is a very timely intervention by the government of India to bring this special support scheme under the name of ECLGS. So if and we'll try to market this and we'll try to push this scheme to all our MSMEs. पिछले कुछ सालों में एमएसएमई तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हो रही है, see प्रभावित भी हुए हैं, and there are a lot of other good things also happened. In the sector, government is also very conscious of this segment, how they contribute to the GDP of the country, how they contribute to the employment of this country. So it's a very, very sensitive sector for all of us, and we are also so what we do as a bank, how do we respond? See, today MSMEs के लिए earlier हमारा जो perception होता था MSME lending में बहुत पेपर वर्क इन्वॉल्व है, right? And the last mile collateral लाइए, guarantor लाइए, the bank used to burden the customer with lots of documentation so as to say. But what we have done for our bank, I can say we have brought a lot of customer delightful products in terms of MSME is concerned. I'll give you 2 examples on that. There are many, I'll give you 2. मतलब एमएसएमई अगर चाहे तो पंजाब सिंध बैंक में जाए तो उस हिसाब से बताइए कि किस। Yes, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया जीएसटी स्कीम लाए, जीएसटी प्रोसेस लाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो हमने एक आसान सा एक स्कीम लाए बैंक के लिए, कस्टमर एमएसएमई कस्टमर्स के लिए, जहां पे मिनिमम पेपर वर्क है, जीएसटी अप टू 5 जीएसटी में अब टर्नओवर बेसिस में up to 5 crores without any collateral, without any paperwork, just based on your turnover, your assessment. With minimum paperwork, you can get more and more. You can get up to 5 crores of support from the bank in terms of lending is concerned. And a bit of extended it to another 5 crores, maybe up to 10 crores. We have some formality of collateral. But the what I'm trying to tell you is this, that we have minimized the paperwork. Why? MSMEs require cash flow based lending. They are not conversant too much with the paperwork. उसका cash flow हम अगर ठीक से judge कर पाते, and GST is one of the best ways to understand उसका turnover कैसे हो रहा है, and that is enough for us to understand. So we have made this as a big product, and it is playing out very well for our bank, and our track record delinquency काफी controlled में, we don't see too much of a challenge there. And another product we have brought, as we talk of supporting the customer with more and more customer-friendly product, we have brought a digital MSME product. You simply scan a QR code of PSB Bank, and you can get a loan of 1 crore. In principle, approval of 1 crore within maybe half an hour, 1 hour also. A principal sanction that can be given to an MSME customer up to a level of 1 crore. And the entire process is digital. You can sit at your home, you can put in your basic details which is required as far as the KYC is concerned, some of the requirement of your activity, and it goes under a business rule engine. It is all done, entire verification is done at the back end, and you are eligible for an in principle sanction of 1 crore. And that's a product which we will think will going forward. अब लोग इसका फायदा उठा रहे हैं. फायदा उठा रहे हैं. We have just launched it maybe 4-5 months back, and we are getting excellent feedback. First of all, the customer just to inquire doesn't have to come to the bank.
he may have to come to the bank for last स्कैन करिए, फिर स्कैन करिए, अपना डिटेल्स भरिए, अपना बिजनेस एक्टिविटी डालिए, अपना जीएसटी नंबर डालिए, आप क्या एक्सपेक्टेड टर्नओवर है, जो भी है वो सारे डेटा, वी हैव पुट इन लॉट ऑफ रूल्स इन दैट बिजनेस रूल इंजन, वो सारे कैलकुलेशन करके आपको बता देगा यू आर एलिजिबल फॉर सच अमाउंट लोन. विद दैट कागज इट विल बी डिजिटली गिवन टू यू. एक कागज यू अप्रोच अ ब्रांच टू द फाइनल डॉक्यूमेंटेशन. अगर कुछ यूनिट देखना है एक्टिविटी, द ब्रांच मैनेजर विल डू सम लास्ट माइल एक्टिविटी. To visit is a place, or visit is compulsory, which cannot be done online. So that visit has to be done. So within one or a maximum of 2 visits. मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो प्रायोरिटी सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में होता है, Correct. कि प्रायोरिटी सेक्टर को हम वाकई में प्रायोरिटी दे रही हो, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी, बहुत सारी डिफिकल्टीज आते हैं. अब देखिए ना, हमारा बैंक में, पंजाब एंड सिंध बैंक, आज एक क्यूआर कोड में you scan one QR code which we display in our branches, and you can get 8 types of loans from the bank, including an MSME. What type of loans? You can get a housing loan, you can get a vehicle loan, you can get a commercial vehicle loan, you can get a MSME loan, you can get a SHG loan, a KCC loan. See, all priority, SHGs, KCCs, MSMEs, housing, affordable housing, priority, vehicle, and आजकल today बहुत demand है. In our bank, our vehicle loan journey, I can claim that we are one of the best. I not claim to be the best, but I can claim to be one of the best in the industry. Our journey is so good and customer delightful experience. Within 15 minutes, you can get a sanction of a vehicle loan sitting at your home on a Sunday. आपकी बातों से मुझे जो लग रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग ये थॉट है कि अगर एमएसएमई सेक्टर को हम स्ट्रेंथन करते हैं तो जो स्थितियां हैं इस वक्त की इकोनॉमी की, उसको हम बहुत हद तक सुधार कर सकते हैं. Absolutely. See, this is what public sector banks are made for. Public sector banks का एक basic responsibility है that we support the government's objective of promoting these priority segments. Not only priority sector, the priority segments like MSME, and MSMEs are what, as a bank, we are focused. Last year, our MSME growth in loan book was as high as 28%, the highest amongst all the public sector banks. So that is the importance we are giving to this sector. You can check our results. Our results show that. And why is that happened? Because we feel that our bank of our size and geographical presence, this MSME segment is a segment which we can handle very well. And our people, my entire team sitting here, they are all geared up at the branch level or at the HO level for facilitating this MSME segment, which is very, very important. जब आपने 28% की अच्छी खबर सुनाई है, हाँ, तो एनपीए की स्थिति क्या है आपके बैंक में, और जो आप फोकस कर रहे हैं कि 3 लाख करोड़ तक का हमारा बिजनेस होना चाहिए, Correct. तो शायद जहां तक याद है कि 4 लाख करोड़ तक का आप लोग का Plan है. 29 तक का प्लान है. Yes, yes. तो क्या रोड मैप है, और इस समय बैंक की स्थिति, क्योंकि 2 चीजें हमने देखी हैं इतने लंबे समय से जब हम पीएसबी को देखते हैं. एक तो रूरल एरियाज में आपके अच्छी है, अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरियाज में अच्छी है. उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा ये 4 लाख करोड़ तक का टारगेट रोड मैप क्या हो? Yes. पहले हम ये बता दें कि आपने एसेट क्वालिटी का ऊपर एक पहले वो हम सेगमेंट देख लेते हैं. अभी आप देखेंगे हमारा ग्रॉस एनपीएल लेवल इज एज लो एज 2.4% overall. This bank was having at one point of time a gross NPA of 14% a few years back. So we have brought it down to 2.4%. That is number one. This is a historic low and one of the lowest amongst all banks. In terms of net NPA, we are at 0.79. We were as high as 2%, 3% plus. Now we have brought it to below 1% of 0.79. Our slippages are at a lowest of 0.74% slippage ratio. Means pura year mein. Slippages have gone down. Our asset quality has improved. Our capital adequacy is adequate at 17.42. We have raised capital from the market showing investors confidence. Why am I saying all this? This is the background based on which we and I like to grow. First of all, what we did, as you rightly said, that our presence in the rural, while it is good in the semi-urban region, and particularly in some states, our presence was not that much visible in the segments, in other cities like metros, urban areas. And you're absolutely right in your judgment. What we are now doing, as you asked me for the plan, I'll come to the numbers later on in terms of expansion. Let me first talk on that.
Presently, we are having 1,654 branches. We are hardly present in over 380 districts of this country. So what we have decided is, one of the strategic plan to reach that 3 lakh crore or a 4 lakh crore is on an expansion spree. The expansion will happen in the states other than the northern part of the country where we are already there. Of course, Uttarakhand will be a strategic point. And when I say northern part of the country, I mean say Punjab, Haryana, Delhi, Himachal, UP. Other than that, Maharashtra, South India, Central India, Eastern India, Northeast. These are the areas where we are going to grow strongly. We have identified 200 top districts of the country, wherein the entire country's 80% of bank business are there. In the top 200 districts, 80% of banks' business is concentrated. I'm not talking about the industry. And we are now present in 163 districts only. So there is a room from 163 to 200 that gives us a room of 37 districts where we can enter. Apart from that, we have taken a strategic plan. Apart from the top 200 districts, we'll open more and more branches in other areas. So whatever is the concentration, आपका expenditure भी तो बढ़ रहा है. Expenditure, but that's a cost we should bear so that we penetrate more and more. That's the initial cost. The break-even of a branch comes in between 2 to 3 years. But if we don't expand, the problem that lies at this point will continue to lie. So it is good to invest at the right time when your bank can bear the cost. Earlier, the bank's profitability was low. Last year, we earned profit of 1,322 crores, the highest ever in the history of the bank. So 1322 crore का जब profit होता है, we feel this is the right time to expand. We'll bear the cost, but that will give me future delta growth in the future. So first of all, we are trying to expand. We have taken a plan to open up 200 branches in the next 2 to 3 years. Selected cities. Top 200 districts, other districts, wherever we find. We have taken a global consultant who is helping us to identify the districts, number one. Number two, we expand through the BC network also. Presently, initially we had 357 BCs 3 years back. Today we are now having 3,100 BCs. We are going to expand it to 6,500 BCs. And our ATM network should be around, today it is around 1,000 to 1,100. We are expanding to 2,100. So overall, 2,000 branches, 2,100 ATMs, 4,100 and 6,000 odd BCs. 10,000 plus touch points. That's the first strategic point in a 3-year map, number one. Number two, as far as the 3 lakh crore business, you have seen my statements, we have reached 2,63,000 crores this year. So we are very confident that we are going to reach 3 lakh crore because last year's incremental growth of 34,500 crores was again the highest ever incremental growth in a year in this bank. So another 35,000 is very easy to achieve. मेरा सवाल इसलिए भी है ना क्योंकि जो सिचुएशंस हैं, इकोनॉमी की सिचुएशंस हैं या फिर जो तमाम ग्लोबलाइजेशन की जो स्थितियां हैं, उसमें क्या हम लोग ये टारगेट अचीव कर पाएंगे या फिर आप लेके लिए पूरे बैंकिंग सेक्टर को अगर मैं देखता हूं तो चैलेंजेस तो हैं, वो और हार्ड हो गए हैं आप लोग के सामने, तब फिर Yes, I think relevant question. But point is, every bank has its own niche area to work on. Yes, we have our own clientele base. We are not in a direct competition with if you see the larger banks, they have their own issues of expansion. We are so small a base, our opportunity to grow is very high. That's why last year, 25-26, we grew at 15% business growth, one of the highest amongst all the public sector banks. So the opportunity to grow is very high. So because we are not present everywhere, so our opportunity to penetrate is very high. Though there will be some impact, and we are not in the large corporate segment too much. We are decreasing our large corporate segment. See, at one point of time, 60% of our portfolio of asset was in the large corporate and 40% was the RAM segment. Today it is reversed. We are at 59% RAM segment and 41% is corporate. And we're going to take this RAM to 65% this year and 70% by FY29. So what we are trying to tell is, the corporate segment gets the first impact. You know, when this economic downturn happens, the corporates get an impact. Uska downstream MSMEs, etc. will happen. So the initial impact will not impact us. Actually, unless it's a big something happen, no one can predict that. In a normal economic, some slowdown,
if we are not too much in the corporate segment, and we are more in the retail and the MSME segment, so the initial जो एक slowdown होता है, that will not impact us to that extent. What will impact us if there is a huge slowdown in the corporate? So the downstream सभी को करेगा, which we can handle. We can handle. So थोड़ा slowdown आता है तो अगर 28% growth हो रहा है तो मैं 25% होगा. That's good enough, ना? So that's a good enough. 20% growth is also good. मेरा 30% नहीं हो, 20% हो. So we have worked out our plan. So what we are thinking now is that we reach 3 lakh crore by this year end, and another 2 years down the line by FY29 we should be at 4 lakh. What also gives us the confidence to reach these numbers is we have got the approval of RBI for opening a forex branch in the GIFT City. I don't know whether you have followed that news. We are one of the banks who got a very quick approval to open a forex branch in GIFT City, and we're going to open it by the second half of this year. And once we open up that, we don't have a foreign presence at this point of time, but once we open it up, it will give us a lot of top-line growth very easily, which we can handle, and which will supplement my domestic growth and reach those numbers of 4 lakh. Okay, so we have worked out a very comprehensive strategy. Our board has worked out a strategy. For last 2 days, we are in a business conference with all the zonal heads and the regional heads. They're all there. They're all geared up to achieve this number. आपकी बातचीत से एक बात तो मैं समझ गया हूँ कि इस समय जो मुखिया है पंजाब एंड सिंध बैंक के, वो पूरी उम्मीदों से भरे हुए हैं और इस टीम को लीड कर रहे हैं. Yeah, and everything is a team. But I am very confident of my team. You see, the मुखिया और MD जो भी है, the team has to deliver, and I am very happy to lead this team. And I am very fortunate also to lead the Punjab and Sindh Bank team at a time when the bank required, and the team required it. And they are responding so confidently to our overall strategies. I think now, as you rightly said that time, that the sky is the limit for this bank. And what else is we are doing? I like to supplement my observations on the growth path. See, growth cannot be taken isolatedly without structural reforms. So what structural reforms we are doing? That will supplement the growth. Structural reforms, what we have done, we have changed the organizational structure of the bank. Today we are opening more regional offices, more zonal offices, In the last 2 years, we have opened 8 regional offices in the areas where we were not there earlier. Means we were there, but not local control. मान लीजिए, Patna was getting control from Kolkata. Bhubaneswar Odisha was getting control from Vijayawada. It doesn't work nowadays. We must have decentralized control. So we opened regional offices in Patna, Bhubaneswar, Raipur, Agra, Bangalore, Shimla, and Moga. So we have opened 8 regional offices. There were 2 GM-headed zones who top of that earlier. Now we have 5 GMs overseeing this structure. Now Mr. Malhotra is sitting in Delhi, who will also be in charge of Dehradun. Okay, so what it gives is a general manager heading a zone. It gives us a much more empowerment to the field to deliver quickly. Not too much dependency on the corporate office. They can instantly deliver faster growth. So organizational structure we have changed. We are expanding far and wide. We have also created a very robust processing. I talked of digital, our cyber security, our resilience operations center we are working on, our risks on operations that are coming, credit underwriting engines, good IT architecture, good products, good processes. So over the last 3-4 years, we have been able to have the best of the products in the industry. And 2 things are very important in a banking organization. One is human resources, and the second is technology. Both have to go hand in hand. And both we are addressing. We have brought in an HR transformation exercise through a global consultant, and we are exercising this, where we will have performance culture in the bank. We have to implement a performance culture in the bank through
digital means of meaning what you call having digital tools for monitoring performance, right? Lot of capacity building. Today's environment requires a lot of skill upskilling. सब डिस्किलिंग चाहिए, अपस्किलिंग चाहिए, उसके लिए एक हम अलग से एक्सरसाइज कर रहे हैं. वी आर ग्रूमिंग यंग ऑफिसर्स टू बी लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री. ऑन टेक्नोलॉजी वी आर अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी. वी आर मैं आपको रोक रहा हूँ. साइबर सिक्योरिटी की बात अभी की मेरे मन में जहन में एक सवाल आया कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर हम लोग की बैंकिंग सेक्टर में इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग हो रही है और उस पर बहुत सारा पैसा लोगों का चला जा रहा है. ये बैंकिंग सेक्टर पे बार बार सवाल उठते हैं कि आखिर बैंकिंग सेक्टर वाले करते कुछ क्यों नहीं है, ये पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. अब बल्कि आरबीआई ने कहा भी कि पैसे कुछ देर तक होल्ड रहेंगे, शायद मेरे ख्याल से 1 दिन तक का होल्ड डाला कि 1 दिन तक होल्ड रहेंगे, उसके बाद होगा. तो इसके लिए हम लोग कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लेके आए ताकि ये चीज हम उसको डायग्नोज कर सके तुरंत. एक्चुअली आपका कंसर्न बहुत एकदम सही है. अल्टीमेटली व्हेन पीपल लूज मनी दे लूज इट थ्रू द बैंकिंग चैनल. ये एक बॉटम लाइन है, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं. बट हमें भी थोड़ा अप्रिशिएट ये करना पड़ेगा कि ये जो बैंकिंग चैनल से लोग नुकसान होता है, चैनल से नुकसान होता है, लेकिन जो रूट कॉज है, समटाइम्स क्या होता है टुडे इन वॉट एवर यू से, समटाइम्स वी कम अंडर प्रेशर टू व्हाट यू कॉल शेयर आवर क्रेडिट शेयर फॉर वॉट एवर रीजन. आजकल डिजिटल अरेस्ट एक बड़ा सा मुद्दा आप जानते ही हैं. मेनी एल्डरली पीपल आर, काफी लोग नुकसान हो रहा है, हम कंसर्न है. तो हमने इस पर मान लीजिए इसी इशू मुद्दे में आते हैं. इस मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है. These fraudsters are sitting outside the country and are duping. They are understanding the psychology of people. उनको घंटे पर घंटा डिजिटल अरेस्ट का नाम में रख के फिर फोर्स का ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं दैट वो बैंक में जाके पैसा तोड़ के उनको एक फ्रॉडस्टर को दे देते हैं. आई एम नॉट गोइंग इनटू द मोडस ऑपरेंडी को आप जानते हैं सब. बट हाउ डू आई रिएक्ट एज अ बैंकर? दैट्स माय जॉब. सो व्हाट वी हैव टोल्ड आवर customers, and I tell this in the meeting, is that, and we are successful there. अगर कोई elderly, particularly senior citizens, if you think any customer is coming to the branch and उसका behavior थोड़ा unusual है, he is under a panic situation, मतलब ऐसा होता है ना, understand हो जाता है. because customers, branch managers, they understand customers very well. वो regular आ रहा है और जो panic से आ रहा है, उसका behavior से पता चलता है. एंड इफ देयर इज अ सिचुएशन, उस पैनिक से आप देख रहे हो कि कोई प्रीमैच्योर का एफडी तोड़ रही है या कुछ हड़बड़ी में साइन कर रहा है, बोलते इमीडिएटली मेरा पैसा भेज दीजिए कहीं, देन आप थोड़ा उस कस्टमर को पॉज करने के लिए कुछ भी बहाना लगा के, बिकॉज इट्स हिज मनी. सी एज एन ऑफिशियल आई कैन नॉट स्टॉप हिम. बट हम देखते हैं कि इनका लग रहा है कि कुछ सस्पिशन है एंड वी शुड हेल्प. देन वी ट्राई टू टॉक विद द कस्टमर and try to understand कि उनका पीछे psychology क्या हो रही है, and try to slow down the process of the encashment. I'm telling you, we have been successful in that. My branches have been successful in preventing such digital arrest transfers very, very successfully, simply by putting a halt. कुछ बहाना बना देते हैं हम. मैं आपको फ्रैंकली बता, कुछ बहाना, आज सिस्टम नहीं चल रहा है, लेकिन ये उनके फायदे के लिए ही है. उस टाइम हमें सुनना पड़ता है, उस टाइम कस्टमर ब्रांच को सुनना पड़ता है, क्यों आप रोक रहे हो, मैं परेशान हूँ, मेरा बेटी का ये प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है. वी फाइंड दैट समथिंग इज फिशी एंड ब्रांचेस प्ले अ वेरी ब्रेव फेस हियर एंड दे ट्राई टू सी रीजनिंग. एंड वही कस्टमर जब वो बच जाता है, दे कम एंड कॉम्प्लीमेंट द ब्रांच ऑफिशियल्स एंड दे अप्रिशिएट दैट हाउ दे हैव सेव्ड देयर money, then we feel very satisfied. At least we could do some duty. So this is one situation. इसके लिए तो आपके पूरी टीम को आपकी बधाई है कि आप इस तरीके से कर रहे हैं. लेकिन ये बड़ा ह्यूमन टच वाला है. ह्यूमन टच बिल्कुल. बैंक्स में सर व्हाटएवर वी जितना भी डिजिटल करें, जितना भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करें, देयर इज अ बिग रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन टच. एंड वी टेल आवर कस्टमर, स्टाफ मेंबर्स, दैट ये आप कभी छोड़ना नहीं, इसको आपको मेंटेन करना है. आप जितना भी टेक्नोलॉजी हम डिजिटल करें, एमएसएमई 1 करोड़ डिजिटल करें, अल्टीमेटली ह्यूमन टच वी फील इज समथिंग व्हिच विल स्टिल वेरी रिलेवेंट इन द करंट इन आवर कंट्री.
एंड ऑफ कोर्स अब न्यू अकाउंट्स के भी आप देख लीजिए, वो भी एक इशू हो रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी। पीपल आर ओपनिंग अकाउंट्स, KYC ठीक रखा है, then for some reason they give their account, they sell it for a commission basis to some fraudster and some transactions are. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल enabler लेके आए हैं with the government support. There is iPort C of Government of India, then there is Mule Hunter of RBI, then fraud risk management solutions are available. Any unusual transactions happening in an account, those alerts come created, and we immediately debit freeze those accounts, at least to a reasonable unless when we are satisfied. And of course, then we tell the branches that you see what is happening in the accounts and try to find out whether those transactions are genuine or not. So, lot of awareness is now getting created. This, जैसे आजकल डेट में ना, the basic mule account का जो basic issue is on the mobile number. The mobile number is the weapon. इसके ऊपर ये सारी कहानी चलता है। एंड लेकिन ये तो कभी आपके लिए बहुत अच्छा टूल होता था, मोबाइल नंबर से ही तो सारी क्या हो रहा है ये सेक्टर में क्या हो रहा है आपको बताओ। मान लीजिए मैं एक कोई कारण से मैं एक सिचुएशन में पड़ गया फॉर माई इकोनॉमिक रीजन और फॉर सम अदर दबाव, एंड आई वांट टू अर्न सम मनी, somebody will come to me, अच्छा कुछ प्रॉब्लम है, then they will ask me कहाँ अकाउंट है आपका, क्या करते हो, some they will try to find out something, अच्छा आपका वहाँ ब्रांच, अच्छा मैं आपको मदद करूँ, हाँ ठीक है करिए, कैसे करना है, आप अपना अकाउंट आपको दे दीजिए, मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स करूँगा, आपका कमीशन दूंगा, एंड आपका मोबाइल नंबर है ना, ठीक है, उस मोबाइल नंबर का हम ना चेंज कर देते हैं, आप एक अथॉरिटी दे दिए, दिस नाउ माई मोबाइल नंबर विल बी दिस. Now, if I get an authority from the actual account holder to change my mobile number, I am duty bound to do it. But we don't know the background of mobile number kahan ja raha hai. The SMSs will go there. So what happens is that Government of India has also identified some mobile numbers. They have a registry, central registry. कौन सा मोबाइल नंबर यूज हुआ है फॉर सच, हिस्टोरिकली वो बन रहा है बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक्सेट्रा, बन रहा है, एक डेटाबेस बन रहा है, और डेटाबेस हम डायरेक्ट इंटीग्रेटेड है बैंक का कोर बैंकिंग से. तो व्हेनेवर देयर इज एनी अकाउंट गेटिंग ओपनड, वी चेक द डेटाबेस, इस अकाउंट इस मोबाइल नंबर से, बिकॉज मोबाइल नंबर हैज टू बी वेरीफाइड फर्स्ट, सो इन बिफोर वी ओपन एन अकाउंट, तो ये मोबाइल नंबर उस लिस्ट में है क्या, ऑटोमेटिक चेक होता है ऑनलाइन. अगर वो पॉपअप आता है कि दिस मोबाइल नंबर हैज बीन यूटिलाइज्ड इन सम एज अ suspected number, then the branches will have to do additional due diligence before they open that. So these are the checks and balances we are. उम्मीद करेंगे अगले 1-2 सालों में जो ड्यूल अकाउंट्स वाली समस्या है वो भी थोड़ी, we expect that. If you ask my bank, I cannot talk about the industry. हम देखें कि हमारा जो मूल अकाउंट्स का जो प्रॉब्लम 1 साल पहले आ रहा था, धीरे धीरे पूरा नहीं गया, धीरे धीरे वो सबसाइड कर रहा है. एंड आई एम वेरी श्योर बिकॉज लॉट ऑफ MHA has become involved, RBI, other agencies have become, law enforcement agencies भी involved हो गया, सब मिलके एक सिचुएशन हो रही है कि everybody, and इसमें बहुत मीटिंग्स होते हैं, स्टेक होल्डर मीटिंग्स, मल्टीपल मीटिंग्स होते हैं, और उन्हें हमें बताया जाता है कि कैसे कौन सा पॉकेट में हॉटस्पॉट है, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. सो वी ऑल्सो लर्न वेरियस वेज ऑफ हैंडलिंग इट, दिस रिस्क. बट इट्स ऑपरेशनल रिस्क. एक ही आपके माध्यम से मैं ये आम सिटीजन्स को ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता. देयर इज नथिंग कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट अंडर द लॉ. वी हैव टू बी वेरी द कस्टमर शुड एनीथिंग, कोई आपको डिजिटल अरेस्ट का धमकी दे रहा है, वो इमीडिएटली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या बैंक को बताए, किसी को बताए. देयर इज नथिंग एज कॉल्ड एज डिजिटल अरेस्ट. एंड अपना क्रेडेंशियल, वेदर इट इज OTP और व्हाटएवर इट इज, शेयर ना करे कोई भी अंडर प्रेशर. दैट इज दीज आर द 2 चेक पॉइंट्स which will save many things, at least initially. And of course RBI also now taken out certain processes of refunding money. Also they have taken out up to a level the bank will also repay some amount lost by a customer. So overall the awareness जैसे बढ़ेगा, I think धीरे-धीरे people will now become much more conscious on these areas. महंगाई बढ़ेगी? ये क्वेश्चन तो मेरे लिए नहीं है, हम बैंकर है, तो बैंकर जैसे ये तो डेटा के ऊपर निर्भर करेगा. इन्फ्लेशन थोड़ा सा
वो तो आप बताएंगे। इंटरेस्ट देखिए, हाँ, ये तो आपने प्रेडिक्ट किया होगा थोड़ा बहुत। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इज ऑफ कोर्स रिपो का अब लिंक्ड है, एंड ओवर द लास्ट जो डेटा पॉइंट्स आ रही है, रिजर्व बैंक ऑल्सो हैज गिवन अ कॉशियस गाइडेंस कि हम और 2 महीना मतलब साइकिल्स देखते हैं। अभी तो इमीडिएटली एब्जॉर्प्शन है, दे हैव नाइदर सेड रेट कट का संभावना, नाइदर दे हैव सेड उल्टा, but of course if the CPI and the WPI numbers have shown some uptick, it's a totally RBI phenomenon, but in the long run, over a one year horizon अगर बोल सकता हूँ, there could be some maybe the RBI will contemplate a hike in the future. But if the GDP numbers also get impacted by the economic crisis, then RBI is the sole decision authority. वो GDP का growth को sustain करेगा या inflation को control करेगा. So it is not for me to decide. We only will go with the flow. लेकिन बैंकर की अगर नजर से देखिए, बैंकर की नजर से देखिए, हाँ, बैंकर की नजर से ये मैं अभी बोल सकता हूँ कि overall this is a time where there will be some impact on the growth in a 1 year down the line, not immediately. Short term में we don't foresee any problem, but the forecast may get a bit down in terms of the numbers, around 25-30 bips का downward, and in that situation what RBI reacts, that remains to be seen. होम लोन और व्हीकल लोन दो बड़ी चीजें जो मिडिल क्लास के लिए रहती है। जो अपनी गाड़ी चाहते हैं, अपना घर चाहते हैं, इसको लेके प्रेडिक्शन क्या है आपकी कि अगर होम लोन और व्हीकल लोन की वजह? This is the right time to buy. Yes, you are right. This is the right time to do it. अच्छा. And interest rate cycles do not last forever. We have had a very honeymoon period in terms of the interest rate, and I think that period is now getting plateaued. Maybe some correction may happen in the future. So those who want to, my view would be that if anyone has a plan for investment in a property or a car, I think this is the right time to do those things, because you never know. Uncertainty is uncertainty, you know, and जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है वी कैन टॉक. जो ग्लोबल सिचुएशन जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है कंट्री का, टू मच, then it's very uncertain. दर्शकों के लिए मैं एक और सवाल, लास्ट आखिरी सवाल आपसे, सोने के रेट कहाँ तक जा सकते हैं? अरे बाप रे, एक साल का हमें कैपिंग पीरियड दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1 साल तक अगर हो सके तो सोना ना खरीदे, लेकिन लोगों के मन में है कि फिर सोना तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? जब आप लोग आपस में मीटिंग करते होंगे तो क्या चर्चा करते होंगे? चर्चा तो करते हैं. There is no permanent, means there is no right or wrong answer. Again, it is all perceptually created. Of course, the Honorable Prime Minister has given has appealed to the general people कि आपको थोड़ा सा patience रखना है इस मैटर में. We see how the people react to it and how it actually impacts the global gold prices in terms of consumption. Ours is consumption based. So we feel that some moderations may happen in the future. It can happen. Yes. बहुत शुक्रिया हमारे साथ बैठने के लिए. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. इतनी बेबाकी से बात रखने के लिए अपनी बहुत शुक्रिया, और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. तो पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ स्वरूप कुमार साहा जी हमारे साथ थे, और सुना आपने कि किस तरीके से बता रहे हैं कि अगर आप होम लोन और व्हीकल लोन के लिए जाना चाहते हैं तो शायद ये आपके लिए सही समय है, लेकिन सोने के दाम कहाँ जाएंगे इसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा. आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.